नमो नारायण. मी शैला चन्नावर, नांदेड ग्रुप नांदेड. होम स्क्रीनवरील वाचन कट्ट्यावरती तुम्हा सर्वांचे स्वागत आहे. देवी कवच पूर्ण भक्तिपूर्वक आणि श्रद्धापूर्वक ऐकू शकता किंवा म्हणता येत असेल तर म्हणू शकता. ओम गुरुभ्यो नमः. अथ श्री देव्या कवचम. ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्ठुप छन्दः चामुण्डा देवता अंगन्यासोक्तमातरो बीजं दिगबन्ध देवतास्तत्त्वं श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः. ओम नमश्चण्डिकायै. मार्कण्डेय उवाच. ओम यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह. ब्रह्म उवाच. अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने. प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः. उक्तान्नेतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना. अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणं गताः. न तेषां जायते किञ्चिदाशुभं रणसङ्कटे नापदन्तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि. यैस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धिः प्रजायते. ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान्न संशयः. प्रेतसंस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्रीगजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मीः पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंससमारूढा सर्वाभरणभूषिता. इत्येता मातरः सर्वाः सर्वयोगसमन्विताः नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः. दृश्यन्ते रथमारूढा देव्यः क्रोधसमाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधं खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शार्गमायुधमुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्त्यायुधानित्थं देवानां च हिताय वै. नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनी. त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिनी. प्राचां रक्षतु मामैन्द्री अग्नेयामग्निदेवता. दक्षिणेव तु वाराहि नैऋत्यान् खड्गधारिणी. प्रतीचां वारुणी रक्षेत् वायव्यां मृगवाहिनी. उदीचां पातु कौमारी ऐशान्यां शूलधारिणी. ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेत् धस्ताद् वैष्णवी तथा. एवं दश दिशो रक्षेत् चामुण्डा शववाहना. जया मे चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः. अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता. शिखामुद्योतिनी रक्षेत् उमा मूर्ध्नि व्यवस्थिता. मालाधरी ललाटे च भ्रुवो रक्षेत् यशस्विनी. त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके. शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी. कपोलो कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शाङ्करी. नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका. अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती. दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका. घण्टिकाञ्चित्रघण्टा च महामाया च तालुके. कामाक्षी चुबुकं रक्षेत् वाचं मे सर्वमङ्गला. ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी. नीलग्रीवा बहिः कण्ठे नलिकान्नलकूबरी. स्कन्दयो खड्गिनी रक्षेत् बाहू मे वज्रधारिणी. हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेताम्बिका चाङ्गुलीषु च. नखाञ्छूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षेत् कुलेश्वरी.
स्तनौ रक्षेन् महादेवी मनः शोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षेत् गुह्यन् गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिका मेड्रन् गुदे महिषवाहिनी कट्यां भगवती रक्षेत् जानुनी विन्ध्यवासिनी जंघे महाबला रक्षेत् सर्वकामप्रदायिनी गुल्फयोर्नारसिंही च पादपृष्ठे तु तैजसी पादाङ्गुलीषु श्रीरक्षेत् पादाधस्तलवासिनी नखान् दंष्ट्राकराली च केशांश्चैवोर्ध्वकेशिनी रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जावसा मांसानि यस्थि मेदांसि पार्वती अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तञ्च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वालाम् अभेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेत् छायां छत्रेश्वरी तथा अहंकारं मनोबुद्धिं रक्षेन्मे धर्मधारिणी प्राणापानौ तथा व्यानन् उदानं च समानकं वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणन् कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्वं रजस्तमश्चैव रक्षेन्नारायणी सदा आयुरक्षतु वाराहि धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून् मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेन् महालक्ष्मी भार्यां रक्षतु भैरवी पन्थानं सुपथा रक्षेन् मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं तु यत्स्थानं वर्चितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी पदमेकन्न गच्छेतु यदिच्छेषु भमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं तं प्राप्नोति निश्चितं परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यः सङ्ग्रामेष्वपराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेनावृतः पुमान् इदन्न तु देव्या कवचं देवानामपि दुर्लभं य पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येष्वपराजितः जीवेद्वर्षशतं साग्रम् अपमृत्युविवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराख्ये चराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकाः सहजाकुलजामाला डाकिनी शाकिनी तथा अन्तरीक्षचराघोरा डाकिन्यश्च महाबला ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसः ब्रह्मराक्षसवेतालः कूष्माण्डा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचे हृदि संस्थिते मानोन्नतिर्भवेद्राज्ञस्तेजो वृद्धिकरं परं यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपेत् सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावत् भूमण्डलं धत्ते सशैलवनकाननं तावत् तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमं स्थानं यत् सुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते। शांति शांति शांतिः। ओम नमश्चण्डिकायै। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते नारायणी नमोऽस्तुते नारायणी नमोऽस्तुते। धन्यवाद।